Welcome to Inforus India Tech. Sections of EPF and MP Act 1952. The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. Act Number 19 of 1952. 4th March 2000 and 1952. An act to provide for the institution of provident funds, pension fund and deposit-linked insurance fund for employees in factories and other establishments. Be it enacted by Parliament as follows. EPF and MP Act 1952, Section 1. Short title, extent and application. Section 1. This Act may be called the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. Section 1 Subsection 2, it extends to the whole of India. Section 1 Subsection 3, subject to the provisions contained in Section 16, it applies. Section 1 Subsection 3a, to every establishment which is a factory engaged in any industry specified in Schedule 1 and in which 20 or more persons are employed, and Section 1 Subsection 3b, to any other establishment employing 20 or more persons or class of such establishments which the central government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf. Provided that the central government may, after giving not less than 2 months' notice of its intention so to do, by notification in the Official Gazette, apply the provisions of this Act to any establishment employing such number of persons less than 20 as may be specified in the notification. Section 1 Subsection 4. Notwithstanding anything contained in subsection 3 of this section or subsection 1 of section 16, where it appears to the Central Provident Fund Commissioner, whether on an application made to him in this behalf or otherwise, that the employer and the majority of employees in relation to any establishment have agreed that the provisions of this Act should be made applicable to the establishment, he may, by notification in the Official Gazette, apply the provisions of this Act to that establishment on and from the date of such agreement or from any subsequent date specified in such agreement. Section 1 Subsection 5. An establishment to which this Act applies shall continue to be governed by this Act notwithstanding that the number of persons employed therein at any time falls below 20. सेक्शन 1, धारा 1, नाम संक्षेप, विस्तार एवं लागू होना। धारा 1 उपधारा 1, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 है। धारा 1 उपधारा 2, इसका प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण भारत है। धारा 1 उपधारा 3, धारा 16 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह धारा 1 उपधारा 3a, ऐसे प्रत्येक संस्थान जो कि अनुसूची 1 में उल्लिखित किसी भी उद्योग के अंतर्गत एक कारखाना है तथा जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, और धारा 1 उपधारा 3b, 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले ऐसे अन्य किसी संस्थान व संस्थानों के वर्ग जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे संस्थान व संस्थानों के वर्ग पर अधिनियम लागू होगा। परंतु 20 व्यक्तियों से कम की निश्चित संख्या में, जिसका अधिसूचना में उल्लेख हो, नियोजित करने वाले संस्थानों पर इस अधिनियम के प्रावधानों को ऐसा करने के आशय का कम से कम 2 माह का नोटिस देकर केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके लागू कर सकेगी। धारा 1 उपधारा 4, इस धारा की उपधारा 3 या धारा 16 की उपधारा 1 में से किसी तथ्य के बावजूद केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को चाहे इस निमित्त आवेदन किया गया हो या अन्यथा यह संज्ञान होता है कि किसी संस्थान के नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बहुमत के बीच सहमति हुई है, इस अधिनियम के प्रावधान उस संस्थान पर लागू किया जाए, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों को इस निमित्त सहमत तिथि पर या उस तिथि से अथवा सहमति के बाद की किसी अन्य तिथि से लागू कर सकेगा। धारा 1 उपधारा 5
किसी भी समय नियोजित व्यक्तियों की संख्या 20 से कम हो जाने के तथ्य के बावजूद वह संस्थान जिस पर यह अधिनियम लागू है वह इस अधिनियम के अंतर्गत बना रहेगा। Let's talk about Section 16 of EPF and MP Act 1952. Act not to apply to certain establishments. 1. This act shall not apply a. to any establishment registered under the Cooperative Societies Act 1912, 2 of 1912, or under any other law for the time being in force in any state relating to cooperative societies employing less than 50 persons and working without the aid of power, or Section 16(1)(b) to any other establishment belonging to or under the control of the central government or a state government and whose employees are entitled to the benefit of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rule framed by the central government or the state government governing such benefits, or Section 16(1)(c) to any other establishment set up under any central, provincial or state act and whose employees are entitled to the benefits of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rule framed under that act governing such benefits. Section 16(2). If the central government is of opinion that having regard to the financial position of any class of establishments or other circumstances of the case, it is necessary or expedient to do so, it may, by notification in the official gazette, and subject to such conditions as may be specified in the notification, exempt whether prospectively or retrospectively that class of establishments from the operation of this act for such period as may be specified in the notification. धारा 16 अधिनियम कुछ संस्थानों पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 16 धारा 16 अधिनियम कुछ संस्थानों पर लागू नहीं होगा। 1. यह अधिनियम ए. सहकारी समिति अधिनियम 1912 का दूसरा या किसी राज्य में सहकारी समितियों से संबंधित अन्य प्रभावी कानून के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी संस्थान जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो तथा जो बिना ऊर्जा की सहायता से कार्यरत हो, या धारा 16(1)(b) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के या नियंत्रण वाले किसी अन्य संस्थान पर जिसके कर्मचारी केंद्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई योजना या नियमों के अनुसार परिचालित अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के हकदार हो, या धारा 16(1)(c) केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य संस्थान पर जिसके कर्मचारी उस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एवं परिचालित योजना या नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि या वृद्धावस्था पेंशन के लाभों के हकदार हों। धारा 16(2) संस्थानों की किसी श्रेणी की वित्तीय स्थिति या अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए केंद्रीय सरकार यह धारणा रखती हो कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समयोचित है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अधीन संस्थानों की उस श्रेणी को इस अधिनियम के प्रभाव से पिछली या आगे की तारीख से अधिसूचना में उल्लिखित समयावधि के लिए मुक्त कर सकेगी। Multiple type questions. Question: How many persons must be employed in a factory for the EPF Act to apply to it? Option A: 5 or more. Option B: 10 or more. Option C: 20 or more. Option D: 50 or more. The answer is C: 20% or more. Who has the authority to specify other establishments, besides factories, to which the EPF and MP Act 1952 applies? A. State governments. B. Central government. C. Local municipalities. D. Employees associations. The right answer is option B. Central government. Under what conditions can the EPF Act be applied to an establishment employing less than 20 persons?
Option A, after 2 weeks' notice. Option B, after 2 days' notice. Option C, after 2 months' notice. Option D, after 2 years' notice. The correct answer is option C, after 2 months' notice, under Section 1(3)(b) proviso. Question: who has the authority to apply the EPF Act to an establishment when the majority of employees and the employer agree to it? A. Employees Union. B. Central Provident Fund Commissioner. C. Labor Inspector. D. State Government. The correct answer is B. Central Provident Fund Commissioner. Which schedule in the EPF Act specifies the industries to which the Act applies? A. Schedule A. B. Schedule 1. C. Schedule 1A. D. Schedule B. The correct answer is B. Schedule 1. Under the EPF Act, what is the penalty for non-compliance with its provisions? A. Fine and imprisonment. B. Warning letter. C. Tax deduction. D. Employee termination. The correct answer is A. Fine and imprisonment. Question: which government body has the authority to make rules and regulations under the EPF Act? A. Parliament of India. B. Supreme Court. C. Central Government. D. State Governments. The correct answer is C. Central Government.